Assalamualaikum, apa kabar? Saya Panta menikmati Idul seperti kami bertiga. Nama saya Rana Umer. nama saya Muhammad Yusuf साहब nama saya Abdul Sibrana. आज एक और वीडियो हाजिर हुए हैं। इस वीडियो है डिबालिंग मासिका टीपी पालिंग बेगान फेमस अंतुक ओरिंग इंडोनेशिया वीडियो क्रिएटेड बाय उसास टीवी लूअर बियासा संगत क्रेन dan हिब्बत dan bagus। जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, इसके से चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के आखिर में हम आपके साथ अपने हालात का इजहार करेंगे, उस वक्त तक हमारे साथ रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। Di mata sebagian besar masyarakat Barat, Indonesia kerap kali dicap sebagai negara miskin dengan kualitas hidup yang buruk. Pandangan ini tidak jarang dipengaruhi oleh pemberitaan media internasional yang menyoroti sisi gelap kehidupan di Indonesia, seperti kemacetan, banjir, serta angka kemiskinan yang masih tinggi. Citra negatif ini membentuk persepsi bahwa Indonesia adalah negara yang suram dan tertinggal. Banyak warga asing membayangkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia penuh tekanan dan penderitaan, sehingga tidak memungkinkan terciptanya kebahagiaan maupun keramahan. Namun, anggapan tersebut ternyata tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Seorang wisatawan asal Barat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia mengaku terkejut dengan apa yang ia temui. Alih-alih menemukan masyarakat yang muram dan tertekan, ia justru disambut dengan senyum, keramahan, dan semangat hidup yang tinggi. Di awal saya membayangkan Indonesia adalah negara yang suram dan tidak nyaman untuk dikunjungi. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Orang-orang di sini jauh lebih hangat dan bahagia dibandingkan di banyak negara barat, ujarnya. Pengalaman ini memperlihatkan adanya jurang antara persepsi yang dibentuk oleh media dengan realitas sosial yang sebenarnya. Banyak warga asing yang menyadari bahwa indikator kebahagiaan tidak selalu sejalan dengan tingkat ekonomi sebuah negara. Beberapa survei internasional bahkan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia termasuk dalam kelompok yang memiliki tingkat kebahagiaan cukup tinggi, meskipun tidak termasuk negara dengan pendapatan tinggi. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa kemiskinan secara ekonomi tidak serta-merta mencerminkan kemiskinan dalam hal kebahagiaan dan kualitas hubungan sosial. Justru dalam kesederhanaan, masyarakat Indonesia menunjukkan kekuatan budaya dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. One thing that I have learned from traveling is that it almost seems like the countries that have the most money have the most depressed people. Meanwhile, people who sometimes don't have the most fortunate lives and upbringings are the happiest, friendliest people. I'm in Bali right now, I'm in Lovina, and I'm walking on the beach by myself, and some guy comes up to me, some older man, starts talking to me for like 10 minutes, telling me about his kids and his life. He never went to school, he grew up, he couldn't read or write, he couldn't speak English. He learned how to speak English just by talking to tourists who come and visit Bali, and his kids, his daughters in school are the ones who are teaching him now how to read and write. And he's the happiest, friendliest dude. Doesn't have the most fortunate life, didn't even have an education, yet now fluently speaks English and is the happiest, smiliest dude ever and lives on the beach. Like, it really does feel like, just from my experience traveling, that a lot of the times the people who come from the richest countries are some of the most depressed, miserable people I've met. Or you visit countries where some people have less fortunate upbringings and less fortunate lifestyles, and they are the kindest people, the most welcoming people. You walk around Southeast Asia anywhere and people come up to you and talk to you, they smile at you. A lot of them will want to like welcome you into their home. Like, I've walked down streets where people just like welcome me into their homes and introduce me to their families. So I will always say that Southeast Asia is superior because number one, the people, and also the scenic views, because look at this. I don't know. You don't see stuff like that where I live, so. I love traveling in Indonesia the most because it doesn't matter where I go, people will always offer to help me. You're in Indonesia. You met with people. When you need something, you need help. Are they really, helpful to you? Always. This is why I love traveling in Indonesia the most because it doesn't matter where I go, people will always offer to help me. Yeah. And again, here I come to Padang. I want to talk about Ramadan. How are you? Fine, and you? Oh, yeah, I am good. Yeah. Anyway, what is your name? My name is Nain. Mahin. Oh, okay. And you? Nice to meet you. I'm Mahfud. Mahfud? Yeah, Mahfud. Yeah. Okay. That's right. Anyway, how old are you? I'm 24. 24. Yeah. Oh my God. And you? That's good. I'm still young. I'm just 19. But you know who's 19?
You look older. Oh, really? Yeah. Like a grandfather, maybe? No. Okay, how long do we be there in Indonesia? I say 1 month. 1 month. Yeah. And after that, where will you go? Back to France to work. Maybe you can give quotes to my friends. Right now, Yeah. I love Indonesia. Thank you. Thanks to Indonesian people because you are also nice. And, Okay. yeah. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Sir. Okay. Thank you. Oh, look when I turn this drone around. Perjalanan keliling dunia seorang wisatawan asing atau bule menjadi sorotan setelah ia membagikan pengalamannya selama mengunjungi berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam perjalanannya tersebut, ia mengungkapkan pelajaran hidup yang tak ternilai saat singgah di tanah air. Menurutnya, Indonesia memberikan kesan mendalam karena masyarakatnya yang dikenal ramah, murah senyum, dan penuh semangat, meskipun secara ekonomi tergolong negara berkembang. Ia menilai bahwa kebahagiaan di Indonesia tampak lebih nyata dan tulus, berbeda dengan yang ia rasakan di negara-negara barat. Ia juga menyoroti perbedaan mencolok antara gaya hidup di negara maju dan berkembang. Ia mengungkapkan bahwa di banyak negara maju, meskipun standar hidup lebih tinggi secara materi, justru banyak masyarakat yang terlihat lebih stres, tertekan, dan terasing dalam kehidupan sehari-hari. Di negara-negara barat, sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai liberalisme, individualisme, dan materialisme seringkali menempatkan kebebasan pribadi dan pencapaian materi sebagai tolak ukur kesuksesan dan kebahagiaan. Namun, menurutnya, kebebasan tanpa arah itu justru kerap berujung pada kehampaan. Banyak orang barat hidup sendiri, makan sendiri, dan menghadapi masalah sendiri. Saya melihat mereka sering merasa kesepian, meskipun hidup dalam kelimpahan materi, tambahnya. Pengalamannya menjadi pengingat bahwa ukuran kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh materi, melainkan juga oleh hubungan antar manusia, rasa kebersamaan, dan cara masyarakat menjalani hidup. I'm gonna say it. It is not normal in society right now. Everyone is so tired and drained and exhausted and emotionally dysregulated, and their bodies have all, physical issues just from stress and anxiety alone. There's just this intensity that I feel internally, and like my intuition is picking up on it because there's so much grief in the world right now, and there's so much divide, not only politically, but just with people's mindsets and their energy. So, it's great that there's this collective consciousness and this shift in how we, value ourselves and place worth on ourselves outside of this capitalistic hellhole. But, all we can really keep doing right now is taking care of ourselves and fighting so that in the future we can make changes that we need to see. Banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia mengaku terkesan dengan budaya dan kehidupan sosial masyarakatnya. Meski Indonesia masih bergelut dengan berbagai tantangan seperti kemiskinan dan ketimpangan, namun ada satu hal yang membuat banyak bule jatuh hati, kehangatan dan solidaritas masyarakatnya. Di desa maupun kota, budaya gotong royong masih menjadi nilai utama. Warga saling menyapa, menawarkan bantuan, dan menghargai satu sama lain. Nilai-nilai budaya ketimuran yang kental serta peran agama yang kuat turut memperkuat ikatan sosial antar individu. Tak heran jika banyak orang asing menganggap bahwa orang Indonesia cenderung lebih bahagia karena memiliki hubungan sosial yang erat dan penuh makna. Dari segi mental dan emosional, masyarakat Indonesia dinilai lebih tangguh dibandingkan dengan masyarakat di beberapa negara barat yang cenderung lebih individualistis. Namun di balik pujian tersebut, ada ironi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia sendiri. Mereka menyadari bahwa banyak potensi besar yang dimiliki bangsa ini, baik sumber daya alam maupun manusia, belum dimanfaatkan secara maksimal. Kalau dengan kondisi sekarang saja banyak orang asing sudah kagum, coba bayangkan bagaimana jadinya kalau seluruh potensi negeri ini bisa dikelola dengan baik, kata seorang pengamat sosial. Pujian dari luar hendaknya menjadi pemicu, bukan sekadar sumber kebanggaan semu. Dengan memperbaiki sistem dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi panutan,
bukan hanya dalam hal sosial, tetapi juga dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar. इंडोनेशिया के जो आज हमने इलाके देखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। आज पहली मरतबा मैंने इंडोनेशिया के कच्ची आबादी वाले जो हैं इलाके देखे हैं और यहाँ पे ब्यूटी भी असल बहुत ज़्यादा है और जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं वो उतने सुकून में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब वाकई सुकून में होता है और खुशहाल लाइफ यहाँ पे लोग गुजार रहे हैं अपनी। और पहली मरतबा हमने ये ऐसा माहौल देखा कि जहाँ की सड़कें भी छोटी हैं और बहुत साफ़ सुथरी सड़कें हैं। भाई ने एक अच्छी मालूमात दी है और ऐसी चीज़ें हमें बताई हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं था और लोगों का रुझान भी इसी तरफ है। लाजमी यही नहीं कि लोग सिर्फ जकार्ता में आ रहे हैं, किसी और सिटी में जा रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बाहर से वो इंडोनेशिया के विलेज का विजिट कर रहे हैं, इंडोनेशिया के विलेज को भी देख रहे हैं और इंडोनेशिया के जो विलेज हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और वहाँ का व्यू बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। अल्लाह पाक ने इंडोनेशिया को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया यार। इंडोनेशिया एक वर्ल्ड पे ना बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जिसे देख के हर कोई यही कहता है कि यार ब्यूटीफुल मानता। माशाल्लाह वहाँ के किसान भी माशाल्लाह अर्नमेंट करते हैं। वो किसान में जो फसल उगाते हैं माशाल्लाह जो बड़े शहरों में बेचते हैं, किसान रहते हैं वो भी अपनी ज़िंदगी सुकून की बसर कर रहे हैं माशाल्लाह। वो भी खुश हैं माशाल्लाह। ब्यूटीफुल यार, मज़ा आ गया उस शहर को देख के। इंडोनेशिया का गाँव देखा है, वहाँ देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लोगों की लाइफ बहुत खुशहाल है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया जी। हमने एंजॉय किया, आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद है, अगर इसको फॉलो करें तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। हर टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।